So, Prabhuji, Devavrata Prabhu, please accept my humble obeisance and closure to Prabhupada. I'll just quickly introduce you, Prabhu, in our local Hindi language, and then we can begin the talk. Thank you. So, देवव्रत प्रभु काफी कम आयु से, जब 17 साल के थे तब भगवत गीता पढ़ के ही भक्त बने हैं, और फिर भक्त बन के उन्होंने अपना जीवन श्री प्रभुपाद और भगवान को समर्पित करने का दृढ़ निश्चय किया, और परम पूज्य श्रीमान विशेषिका प्रभु के, विशेषिका महाराज के शिष्य है, और विदेश में रहते हैं, और वहां पर ग्रंथ वितरण की विशेष ट्रेनिंग प्राप्त करके प्रत्येक दिवस वे व्यक्तिगत रूप से ग्रंथ वितरण के लिए बाहर जाते हैं, और यहाँ इंडिया में भी श्रीमान राधेश्याम प्रभु के सानिध्य में ट्रेनिंग लेकर यहाँ भी यूथ प्रीचिंग इत्यादि बुक ग्रंथ वितरण सेवाओं में उन्हें मदद करते हैं। और हमारा परम सौभाग्य है कि हमें देवव्रत प्रभु का संग प्राप्त होगा। सो आज जैसे आप सब जानते हैं रविवार है, सो आज की टॉक अंग्रेजी में होगी, उसका नीचे ट्रांसक्रिप्शन भी होगा, और हम प्रयास भी करेंगे कि ट्रांसलेशन भी करें आप सभी के लिए। सभी भक्तों से अनुरोध है कि अभी लॉग आउट या लीव करने की आवश्यकता नहीं है, बने रहिए और प्रभु जी का हम मार्गदर्शन और उनका अनुभव सुनते हैं। अब now we would like to request Devavrata Prabhu to kindly begin today's Japa talk. So till now they were just expressing and sharing their realizations on book distribution. So every day devotees are going out. So every day we do this 15 minutes realization sessions. So sorry for the delay. You may kindly begin today's talk, Prabhu. Hare Krishna. Omagyanatimirandasya ginanjana shalakaya chakshurunmanitam yena tasmai shri gurave namah shri chaitanya manobhistam stapitam yena bhutale swayam rupa kadamayam dadati svampadantam. I offer my obeisances to His Holiness Param Puja Lokanath Swami Maharaj. When I distribute books in America, I will carry around a small speaker in my book bag, and I'll play Maharaj's kirtans when I'm distributing books. And it gives me a lot of strength and enthusiasm. So it's a pleasure to be in the association of all you devotees and receive the glance of Maharaj in any small way. So I'll quickly translate for you, Prabhu. Please. Yeah. तो प्रभु जी कह रहे हैं कि महाराज जी के श्री चरणों में अपने हृदयपूर्वक प्रणाम और आभार व्यक्त कर रहे हैं, और वे सबसे पहला अपना साक्षात्कार अनुभव ये बता रहे हैं कि जब भी प्रभु जी ग्रंथ वितरण के लिए जाते हैं प्राय प्रत्येक दिवस, तो अपने ग्रंथों के बैग में थैले में वो छोटा सा एक स्पीकर रखते हैं, और उसमें गुरु महाराज जी का कीर्तन चलता है। तो वे गुरु महाराज जी का एक प्रकार से गुरु महाराज जी के संग और सानिध्य में ही ग्रंथ वितरण कर रहे हैं, और आज गुरु महाराज जी का उन्हें दर्शन भी प्राप्त हुआ, तो कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं प्रभु जी। So I wanted to speak about the qualities of a book distributor, and how actually book distribution is an opportunity for us to develop Shastra Chakshus. That when we're distributing books, it's not just a matter of going out and selling something, but actually we should be developing the consciousness of being able to see the world through the lens of the Bhagavad Gita and see the world through the lens of the Srimad Bhagavatam. प्रभु जी कह रहे हैं कि जब हम ग्रंथ वितरण करते हैं, या एक प्रकार से आज प्रभु जी ग्रंथ वितरक के गुणों के विषय में चर्चा करेंगे, क्या गुण होने चाहिए ग्रंथ वितरक में। और फिर कह रहे हैं कि ग्रंथ वितरण एकमात्र बाह्य स्तर पे कोई सेवा नहीं है जहां हम ग्रंथ लेकर बाहर चले जाए और लोगों को दे दे या बांटे, अपितु ग्रंथ वितरण शास्त्र चक्षु के माध्यम से इस भौतिक जगत को देखने का एक माध्यम है, या एक सेवा है, जहां पर हम देख सकते हैं इस दुनिया को, इस संसार को शास्त्रों के दृष्टि से, या एक प्रकार से हम कह सकते हैं भगवत गीता की दृष्टि से। So in the Bhagavad Gita, there's a description of the living entity's conditioning, which is Purusha Prakriti Stohi Bhakte Prakritir Jangunan Karanam Guru Sango Syat Sarasadyoni Janmasu, which is basically explaining that when the living entity tries to take the position of being an enjoyer within this world, then he's pulled by the material energy in different directions, and he's forced to act according to how he's associated with this world previously. प्रभु जी कह रहे भगवत गीता में साफ प्रकार से बताया गया है कि किस प्रकार से जब एक व्यक्ति या एक जीव
अपने आप को कर्ता मान लेता है या कर्ता भाव में स्थित होता है, तो किस प्रकार से वो कार्य करता है और किस प्रकार से वो न करणीय बातें या न करणीय कार्य भी करता है। So this verse is describing that actually the conditions that we're going up against and trying to give Krishna consciousness to other people, they're very challenging and practically insurmountable in many ways, because the nature of the living entity is they're turning away from Krishna. Krishna bole save jeev, anahir bahir muk. That Krishna, the living entities turn away from Krishna, and by being turned away from Krishna, they're grabbed by the material energy and forced to act according to their conditioning. So to interact with those people is extremely difficult. What to speak of giving Krishna consciousness to them. और फिर उसी श्लोक में आगे बताया गया है कि प्राय एक बद्ध जीव या भौतिक जीव का स्वभाव रहता है कि वो भगवान से विमुख होना चाहता है, और ऐसे लोगों को या ऐसे जीवों को जब हम भक्ति या कृष्ण भावना भावित बनाना चाहते हैं तो काफी कठिन और गंभीर कार्य हो जाता है। एक प्रकार से वो असंभव कार्य है। So when we're distributing Srila Prabhupada's books, we shouldn't see that what we're doing is some type of material activity, because in order for any book to go out, it requires the sanction of the Supreme Personality of Godhead. तो जब हम ग्रंथ वितरण करते हैं तो हमें ये नहीं मानना चाहिए कि हम पुनः प्रभु जी कह रहे हैं कि हम कोई भौतिक स्तर की कोई कार्य या सेवा कर रहे हैं। अभी तो हमें समझना चाहिए कि हर एक ग्रंथ जो हम वितरित करते हैं या ये हर एक ग्रंथ जो हमसे वितरित होता है वो केवल और केवल भगवान की कृपा से या भगवान की योजना से हो रहा है। हम पूर्ण रूप से असमर्थ है ये कार्य करने। So in the 18th chapter of the Bhagavad Gita, Krishna explains the different ingredients which influence activity and action within this world. तो भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि किस प्रकार से किसी भी कार्य या किसी भी कार्य करने के पीछे की जो मानसिकता या इच्छा है उसे 3 गुण किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। So Krishna said that distanam tata karta karanam cha pritavidam vividas cha prita chetas daivam chaitatra panchamam. That the place of action, the worker, the endeavor, the senses, and ultimately the sanction of the Supreme Personality of Godhead. These 5 things influence action and activity within this world. भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि इस भौतिक जगत में कोई भी कार्य 4 से 5 चीजों से प्रभावित होता है। उसमें 4-5 चीजों के नाम दिए गए हैं कि कार्य करने वाला यानी कर्ता, व्यक्ति, उसकी इच्छा, उसकी इंद्रिया, और फिर सबसे महत्वपूर्ण है भगवान की कृपा। तो किस प्रकार से हर एक कार्य इस भौतिक जगत में इन चीजों से प्रभावित होता है और सबसे महत्वपूर्ण है भगवान की कृपा। उसके बिना कोई भी कार्य इस भौतिक जगत में नहीं हो पाता। So even if we go to the best place for distributing books, even if we have the right enthusiasm and determination to go out, even if our senses and mind are controlled, even if all the ingredients are there, unless we have the sanction of Krishna for the books to go out, no one can take a book. कई बार आप सभी ने अनुभव किया होगा कि हो सकता है कि हम बहुत ही सही स्थान पर पहुंचे ग्रंथ वितरण करने, हो सकता है कि हमारा उत्साह बहुत अच्छा है, हो सकता है कि हमारी इंद्रिया भी संयमित है, हम पूर्ण रूप से केंद्रित है कि हमें बस भगवान और गुरु महाराज और श्री प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए कार्य करने हैं। सभी कुछ अनुकूलित होता है, फिर भी यदि भगवान की कृपा नहीं होती या भगवान की इच्छा नहीं होती तो एक भी ग्रंथ वितरित नहीं होता है। So in the 13th chapter, right after the verse Purusha Prakriti Stohi, Krishna explains how he's functioning within the living entity. He says, Upajastanumantam cha Bharta Bhokta Maheshwaram Parameti Chapi Yukto Dehismim Purusa Paraha. That beyond the conditioning of the soul and beyond just the living entity existing within the material body, there's another who's the enjoyer, the proprietor, and the sanctioner of all activities. तो भगवान 13वें अध्याय में बताते हैं किस प्रकार से भगवान हर एक जीव के हृदय में स्थित होकर किस प्रकार से कार्य करते हैं कि जीव जो है वो कार्य करता है
और भगवान जो है उसे देखते हैं और उसे उस कार्य को करने की अनुमति देते हैं या नहीं देते हैं। तो इस प्रकार से भगवान का कार्य बताया गया है, किस प्रकार से भगवान हमारे या एक जीव के साथ किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। So in order for us to attract the attention of the Supreme Personality of Godhead, we need to be developing the qualities of a devotee. We need to be developing the qualities of a preacher. तो भगवान की कृपा प्राप्त करने या भगवान की कृपा आकर्षित करने सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये बन जाता है कि हमें भगवान का भक्त बनना होगा। So Krishna explains in the Bhagavad Gita what those qualities are, particularly in relationship to who a preacher is. He says, Labante Brahma Nirvanam Rasanai Ksina Kalmasa Chitta Daitva Yadatmanam Sarvabhuta Riterata. So within this verse, Krishna is explaining that one who is situated in the proper consciousness of a preacher, they see they're active with it. They're not dependent on external circumstances for their satisfaction to be there. Their source of happiness isn't based on whether a bunch of people take books. Their source of happiness isn't whether they're glorified at the end of the day for distributing the most books, or if they get the Maha plate at the end of the day. What they're the most their satisfaction comes from their connection with Krishna. Rasayana Kalmasa. Rasayana means they're relishing from within the relationship with Krishna and the relationship with Guru. And even if they're not able to provide a quantitative result due to that qualitative effort that they've exhibited to sincerely serve the spiritual master, that's where their source of satisfaction comes from. तो आगे भगवान ये भी बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत बताते हैं कि एक प्रचारक का क्या गुण होता है या एक प्रचारक का क्या स्वभाव होता है, क्या स्वभाव रहना चाहिए। तो वहां पे प्रभु जी बहुत सुंदर भाव से बता रहे हैं कि प्रचारक का ये भाव नहीं होता है कि जब ग्रंथ वितरण करने वो निकलता है तब ये सोच के निकले कि कल सुबह मंगल आरती में अनाउंसमेंट में मेरा नाम आएगा, मुझे माला पहनाई जाएगी, मेरी जय जयकार बोली जाएगी, या मुझे राजभोग या महाप्रसाद का प्लेट दिया जाएगा, या मैं बहुत बड़ी मात्रा में ग्रंथ इसीलिए वितरण करूं क्योंकि मेरा नाम हो जाए। ये भाव बिल्कुल नहीं रहता एक प्रचारक का। अपितु एक प्रचारक इससे संतुष्ट होता है कि उसका जो हृदय में उसके परमात्मा या भगवान के साथ उनका जो संबंध है, उनके गुरु के साथ उनका जो संबंध है, उनके गुरु और उनके भगवान जब प्रसन्न होते हैं उनके प्रयास मात्र से और उन प्रसन्नता से जो उन्हें प्रसन्नता प्राप्त होती है, तो एक प्रचारक का वास्तविक भाव ये रहता है और ना कि ये भाव रहता है एक प्रचारक का कि उनके बाह्य स्तर पे उनकी वाह वाह हो। And then it goes on to say, Ksina Kalmasa, which means that they're devoid of all sins. So if one is following the four regulative principles, chanting their rounds properly and maintaining proper Vaishnava conduct, in the Chaitanya Charitamrita, Sanatana Goswami glorifies Srila Haridas Thakur for his qualities of being the perfect preacher. He says, Achar Prachar Namar Karya Duikar Tumi Sarva Guru Tumi Jagatera Arya. That because you behave properly and because you preach properly, you're qualified to be the Jagat Guru, the guru for all the worlds. Because some people, they can preach, but they don't know how to behave. Some people can behave, but they don't know how to preach. So the Ksina Kalmasa means that we have proper conduct, we have proper character, we have purity of purpose in our actions, and there's no duplicity. Means that what's within inside and how we interact outside, they're identical. There's no hankering from within the heart for labh, puja, pratishta. It's simply a desire to want to serve the Supreme Personality of Godhead. And because of that, one doesn't have any faults in their character. And when one doesn't have any fault in their character, then they're able to easily give Krishna consciousness to other people. तो आगे प्रभु जी बता रहे हैं कि किस प्रकार से एक प्रचारक का चरित्र भी बहुत ही साफ होना चाहिए और चरित्र के साथ साथ उनका आचरण भी बता रहे हैं कि कई बार ये देखा जाता है कि कई प्रचारक या कई भक्त उनका आचरण सही होता है लेकिन उनका प्रचार सही नहीं होता, या उनका प्रचार सही होता है लेकिन उनका आचरण सही नहीं होता।
अन्य शब्दों में कहा जाए तो वो जो करते हैं और वो जो बोलते हैं उन दोनों के बीच भिन्नता रहती है। तो ये अगर होगी अवस्था तो ये सही बात नहीं है, तो जी बता रहे हैं। और फिर आगे कह रहे किस प्रकार से सनातन गोस्वामी ने श्रील हरिदास ठाकुर का गुणगान किया चैतन्य चरितामृत में, जहां उन्होंने उनका गुणगान करते हुए कहा कि आप जैसा व्यक्ति, आप जैसा भक्त जगत गुरु बनने के योग्य है, क्योंकि उनका आचार और प्रचार दोनों समान है। फिर प्रभु जी ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से हमारा आचरण और हमारा प्रचार दोनों भी एक ही होना चाहिए। अगर हम अंदर से कुछ और है और हम कहते हैं कुछ और, तो वो बात सही नहीं है और उससे भगवान या गुरु ज्यादा प्रसन्न नहीं होते। Then it goes on to say, Chitta Daitva Yadatmanam, that one whose mind is beyond the dualities which arise from doubt. The primary source of conditioning Krishna explains that we have in this world is Icha Dvesha Samutena, that we're stuck on this Raga and Dvesha platform of accepting and rejecting. And so this causes us to doubt the mercy of the Lord in our life. So a preacher, having refined their intelligence through the study of Shastra, they are able to see everything in relationship to Krishna. Yastu sarvani bhutani atman yevan upashyati. Sarva bhuta chadatmanam tato na vijigupsate. The Isha Upanishad explains that one who sees Krishna in all things and all living entities in Krishna, they have nothing to hate in this world. So even if one is having a bad day on Sankirtan, even if no one is taking books, they don't hate the people that they're interacting with. And they simultaneously don't doubt Krishna's hand in their life. They don't doubt Krishna's sanction within the service. They trust that whatever is happening for my own purification. This is a point my spiritual master emphasizes a lot in relationship to book distribution. But the best mantra that we can have when we're going out on book distribution is I'm engaging in this service for my own purification. So if one is fixed in this consciousness of simply trying to purify the heart, then what will happen is they'll go beyond this sankalpa, vikalpa of the mind, and they'll be able to see Krishna's hand within every circumstance within their life when they're distributing books. फिर आगे प्रभु जी बता रहे हैं कि एक प्रचारक का और एक गुण होना चाहिए कि वो इन भौतिक जगत के द्वंद्व से मुक्त हो या परे हो। तो ये करने के लिए हर एक व्यक्ति या हर एक भक्त या प्रचारक या ग्रंथ वितरक को शास्त्रों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उसी सिद्धांत पे वो टिका रहेगा या वो प्रचारक टिका रहेगा। जब भी उसे सफलता प्राप्त हो या निष्फलता भी प्राप्त हो तो वो विचलित नहीं होगा, क्योंकि उसे पता है कि वो क्या कर रहा है। कई बार ये होता है कि ग्रंथ वितरण करने में पूरा दिन निकल जाए, लेकिन फिर भी हमें हमारी वांछनीय हमारा श्रेय प्राप्त ना हो, हम जो चाहते हो वो हो नहीं, हम जितने ग्रंथ वितरित करना चाहते हो उतने ग्रंथ वितरण ना हो। लेकिन उस समय में या उस अवस्था में जब हम जिसे कहते हैं कि अच्छा दिवस नहीं गया, अच्छा दिन नहीं गया ग्रंथ वितरण का, तो उस अवस्था में वो व्यक्ति या वो भक्त या वो प्रचारक विचलित नहीं होगा, क्योंकि उसके पास शास्त्रों का ज्ञान होगा कि किस प्रकार से भगवान का हर एक कार्य के पीछे एक योजना है और किस प्रकार से हर एक जो हो रही है अवस्था उसमें भगवान का पूर्ण रूप से उनका एक प्रकार से हम कह सकते हैं हाथ है। तो जब ये ज्ञान में स्थित होता है एक भक्त या एक प्रचारक, तो वो ज्यादा विचलित नहीं होता है ग्रंथ वितरण करते समय। और प्रभु जी कह रहे व्यक्तिगत रूप से उनके गुरु महाराज इस विषय पे बहुत ही ज्यादा भार देते हैं या इस विषय पे बहुत ही ज्यादा जोर देते हैं कि एक प्रचारक का ग्रंथ वितरण के समय कैसा भाव और कैसी स्थिति होनी चाहिए। Thank you for remembering all that, Prabhu. Was trying my best. I'm sorry. I should have given some breaks in between. But then this last line is very important. Sarva bhuta rite rata. The sarva bhuta means for the sake of all living entities, one is engaging in rite rata. One is engaged in welfare work for all the living entities. So one should be fixed in a disposition of compassion. और अंत में जो अंतिम लाइन में श्लोक के अंतिम चरण में बताया गया है वो ये है कि हर एक भक्त या हर एक प्रचारक या हर एक ग्रंथ वितरण का एक समान भाव होना चाहिए, वो है इस भौतिक जगत के बद्ध जीवों के लिए दया भाव। तो जब एक भक्त इसमें स्थित होता है
तभी वो अच्छे से ग्रंथ वितरण कर सकता है. And even if one doesn't feel compassionate, one should feel a sense of dependence upon their superiors, on their spiritual master, and feel that I may not be compassionate, but I know they are. And this is the activity they're asking me to do for the people. So I'm going to give my entire life to this activity. हो सकता है कि हमारे अंदर जितनी दया या दो दया भाव होना चाहिए वो ना हो, या हम उस दया भाव में स्थित ना हो, लेकिन हमें दया भाव ना हो या दया भाव के साथ साथ और एक भाव होना अति आवश्यक है, वो है शरणागति भाव. कि हमें ये पता होना चाहिए, हम ये जानते होने चाहिए कि हमारे गुरुजन, हमारे आचार्यों का क्या भाव रहा है. तो एक भक्त ये सोच सकता है कि मुझ में तो दया नहीं है इस भौतिक जगत के बद्ध जीवों के लिए, अपितु आचार्य मेरे गुरुजनों के हृदय में इन सभी के लिए बहुत ज्यादा दया और अनुकंपा है. तो हमें केवल माध्यम बन रहा है उनकी दया को आगे पहुंचाने का. और जब इस भाव में हम स्थित होते हैं तभी भी हम सुचारू ढंग से ये सेवा या ये कार्य कर सकते हैं, और एक प्रकार से पूरा जीवन हम ये सेवा में लगा सकते हैं. So to extend oneself for the purpose of the previous acharyas, to extend oneself for the mission of the spiritual master, Bhaktivinoda Thakur says, Jiva Doi Krishna Nam Sarva Dharma Sar. This is the essence of all religious principles. To extend oneself for the purpose of the living entities who the previous acharyas and the spiritual master feel compassion for, and to give them the opportunity to chant Krishna's name. This is the essence of all spiritual teachings. तो जब हम ये कार्य करते हैं जहाँ पर हम एक माध्यम बन जाते हैं, जहाँ पर हमारे गुरुजन और आचार्यों की कृपा और अनुकंपा हम बद्ध जीवों तक पहुंचाते हैं, तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर अपने भजन में या अपने गीत में कहते हैं कि ये सबसे उत्तम कार्य है. एक प्रकार से ये सारे धार्मिक क्रियाओं का सार है कि जहाँ पर एक व्यक्ति अपने आप को अपने गुरुजनों का भाव और अपने गुरुजनों की दया या अपने गुरुजनों का संदेश पहुंचाने के लिए अपने आप को प्रस्तुत करता है. So I don't know if anyone has any questions, but I think it was only from 7 to 7:30. So if we can open it up for discussion, we can do that, or whatever we do next, Prabhu, we can. Sure, we can open the floor for questions, Prabhu. Some quick 2-3 questions. Sure. तो प्रभु जी कह रहे हैं कि समय की पाबंदी की वजह से ज्यादा हम इस पे अभी तो आगे चर्चा नहीं कर पाएंगे, लेकिन बहुत ही अच्छे से प्रभु जी ने जो समझाया है, तो इसमें आपके किसी के कोई प्रश्न है आज के जपा टॉक के संबंधित या विषय में, आप हैंड रेस करके पूछ सकते हैं. राधा स्मृति माता जी. Hare Krishna Prabhu, Dandavad Pranam. Prabhuji, I understood that when we go out for book distribution, we should not think that like